हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंटिन्यू करिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे हम पढ़िले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानछो 11th क्लास रे एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another form. That is conservation of energy. Exactly. Any conservation कहले some conservations are universal. Like conservation of charge. गोटे सिस्टम आम नहीं जिबा एज्यूम करिया किछि चार्ज बॉडी अछि ताको बाय एनी मीन्स ताको जदि आउटे नुआ चार्ज सब जा मिसे दे गोटे नुआ चार्ज करिवा तो देखिबा पूर्वे जहा चार्ज रहला पर भी से चार्ज रहे बट द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड मीन्स आमे जो एज्यूम करिवा बाउंड्री से बाउंड्री में तू नुआ किछि एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करबा को हबनी लाइक जदि आमे कहबा दिस इज ए बाउंड्री एटे चार्ज थिला q1 और q2 बोथ थिला तो दिस आर मिसिंग थिला इट इज एडिटिव नेचर नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज q1 q2 बाय एनी मीन्स जदि सही तो आमे कन्वर्ट करिया माने करा q1 टा कन्वर्ट हला q3 की तो q2 टा कन्वर्ट हला q4 बोथ दीज आर पार्टिकल्स so a particle जदि कोनोसी means by any means there are many means that can be converted तो देखाला 8 रो q3 और q4 पूर्व थिला q1 plus q2 और हला q3 plus q4 that remains constant this is simple conservation of charge तो एटा खाली गोटे जिंस ए जो बाउंड्री हम एज्यूम करछे this is isolated माने it is free from any other system or it is free from surrounding ताको हमें अलगा उठे नबा ताको कोनते आइसोलेटेड सिस्टम जो भी तुको हमें q1 q2 रखिचे हठात हमें किछे एंटर करिवानी एंटर कर देल तो नुवा चार्ज आउट एंटर हे गेला तो एई चार्ज रा कन्वर्ट होला तो सेतेबेले रूल ऑफ वैलिड नै सो हमें सिंपल लिखिबा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज what is conservation of charge simple principle in an isolated system isolated barambar kosi isolated system charge can neither be created nor be destroyed that means net charge remains constant जदि बिफोर चार्ज ला q1 plus q2 और भी चार्ज जदि q3 plus q4 हला तो निश्चित भाव समेशन सेम हो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओके तो हम एग्जांपल ले परिया लाइक एग्जांपल्स अब एमते एग्जांपल नबा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लिख परिया तमे जतले कंजर्व व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जे 2 मार्क्स रहितबो एग्जांपल गोटे नै परियो दैट इज पेयर प्रोडक्ट्स नो लिखो पेयर प्रोडक्ट्स इट इज अ फिनोमेना मींस टू पार्टिकल्स गोटे हो इलेक्ट्रॉन जोटा नेगेटिव चार्ज देबी -1 दे परी पर माइनस देबी आउटा पार्टिकल एम्प्टी पार्टिकल पॉजिट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन आउटे पॉजिट्रॉन ए दिटा कोनते ए पेयर that has been produced from a gamma photon there is a process this process का pair production तो gamma photon रो देखिया जदी चार्ज के थिला 0 itself photon is not having any charge so it is 0 तो देखियो मतलब इलेक्ट्रॉन एटा electron this is positron when they have been created एरो जे हम टोटल नेट चार्ज करिया केते आसो इट इज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 * 10⁻⁹ एक्जेक्टली प्लस 1.6 * 10⁻⁹ that will be again comes to 0 so this is an example अच्छा आरा रिवर्स एग्जांपल हम नै परिया दैट इज कोनदी जदी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिसमेंटल हे गेला बा एनिहिलेट करहला देन दे आर फॉर्मिंग where annihilation कोनदी means इलेक्ट्रॉन किछ अछि पॉजिट्रॉन हम जदि मिसे दला देखिबा मास एनर्जी इक्विवेलेंस से मास ततले
कन्वर्ट हो एनर्जी रे तो दीटा गामा फोटोन जो तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री आसीबो सेतबे हमें गामा फोटोन रो ईच गामा फोटोन एनर्जी बा काइनेटिक एनर्जी केते पचारियो जस्ट एमान दीटा मास को mc² कन्वर्ट कर दे हमें गामा फोटोन रो एनर्जी हमको एबे एनर्जी कन्वर्सन दरकार नहीं हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दरकार तो एग्जैक्टली नेट चार्ज हला केते 0 एटे नेट चार्ज केते थिला 0 so charge is conserved similarly we can take another example like जदि हमें सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करिया मोल्टेन एंड आयनाइज करिया तो दैट विल बी फ्रॉम सिंपल एग्जांपल तो इट भी कोई नेट चार्ज के थिला 0 रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड इट इज नेट चार्ज इज आल्सो 0 similarly we can take the example of your nuclear fission uranium I mean what 92 uranium 235 ता सहित उठे न्यूट्रॉन ऐड करिया बॉम्बार्ड करिया तो देखिबो बेरियम क्रिएट हबो क्रिप्टन क्रिएट हबो along with 3 neutron and energy will relevant so by doing this you will find the total charge also remains constant so it will form 56 barium and 36 chromium हमें 141 नहीं परिया mass number so this is your 92 approximately so in the neutron it is coming 35516 so 236 let us suppose see तो sense को अगर it is 92 था 92 proton each proton is 1.6 × 10⁻19 coulomb जो देखिबो तो टोटल चार्ज एटा एटा टोटल चार्ज केता आछो 56 proton plus 36 proton this it is also 1.6 × 10⁻19 so both are equal so this signifies conservation of charge is valid everywhere this is what called conservation of charge definition likhibo and some example you will write down okay and another property that is called invariance of charge देखा जाओ ये पसंद है yes invariance of charge होचे charge vary हबरा नाही with respect to speed अच्छा आमे जानि छे गोटे पार्टिकल रो मास আছে m0 यदि हाई स्पीड रे गला means speed is equivalent to light speed v is equivalent to suppose c by 2 रे गला c is velocity of light देखियो तार मास चेंज हेजु m हेजु from Einstein relativism theory. So Einstein relativistic approach says when a mass or particle is having mass that is moving with a speed comparable to the light speed, then its mass is supposed to be changed by a formula 1 minus v square by c square. It is relativity to hame there is a formula for it. So v दा सबोले c to छोटो तो this 1 minus v square by c square root over is called beta. This is less than 1. So definitely the mass will be greater than m0. Yes, mass will be greater than m0. See? So कोया सेंस होची mass vary करिवो with respect to speed. Speed जदि गोटे particles हाई स्पीड रे जाउची तर मास बेर वैल्यू c by 2 नै परियो c by 10 नै परियो कंपेरेबल टू द लाइट स्पीड तार तो v टा बहुत छोटा हेले तो मास टा सेम रहिछु v जदी कंपेरेबल हो सिमिलरली देखा हला जदी हमें लेंथ गुडा ऑब्जेक्ट अछि लेंथ रे मध्ये चेंज हो l is equal to l0 into root over 1 minus v square by c square एटे लेंथ will be less than l0 सेमती जदी किछु गोटे इंटरवल टाइम अछि किछु गोटे एक्सपेरिमेंट करछो गोटे प्लेटफॉर्म रे किछु गोटे एक्सपेरिमेंट करछो एंड दैट प्लेटफॉर्म इज मूविंग विथ एट हाई स्पीड सो देखा हला जदि तार टाइम पीरियड टा रेस्ट समय रे डेल्टा t0 हाई स्पीड गले तार टाइम पीरियड रा चेंज हो वेयर द टाइम will be more than this these are called
variance of mass, variance of time period, variance of length contraction, length contraction, time dilation, dilate hela, body होला भली लागियो experiment. This is mass, increase in mass भी बढ़ो. तो जेहेतु charge is an inherent property of particle, so charge हुए कौन देखला, charge there is no change, and this concept is called invariance of charge. Charge देखिबो, charge जहाँ थिला परे से आला, charge सहित velocity ର କିଛି relation ही नहीं. So charge तो हमें कौन define कर परिया, charge does not vary. Charge of a particle लिख परियो, of a particle or body does not vary with velocity. Whatever may be the velocity, charge of particle does not change. That remains same as that. If a particle having charge q0 is moving with high speed, the charge does not change. This concept is called invariance of charge. Mass रे change हबो, length रे change हबो, time taken जदि किछि होछि सेटर मध्ये change हबो, किंतु charge रे change हबोनी. Okay, invariance of charge. Another important one is, that is your, what type of field is produced? What happens when charge moves actually? अच्छा है, हमें आउट प्रॉपर लिख परिया, static charge. होला, हमें 6 प्रॉपर नवा, static charge produces electric field only. But charge in the rest अच्छी, ता चारी पट्टे electric field किया करो. हमें the electric field विषय में पूछिया, what is field? There is a field surrounding it. In the mass रखले ता चारी पट्टे gravitational field अच्छी, सेम दी उन्हें charge होले ता चारी पट्टे rest अच्छी वाले electric field. एक है velocity of charge is 0. अच्छा, when charge moves uniformly moves. Would a charge say constant velocity, v is equal to constant velocity move force. So it produces magnetic field. Charge is move करिवा, आप जैसे किसी iron or compass needle रखिया, that needle will deflect. ताकि आज चारी पटे उन्हें magnetic field create हो. Magnetic field विषय में पढ़ियो. So there is a gravitational field, there is a concept. Electric field, since magnet जो field create हुए magnetic field, charge move करिया द्वारा उन्हें magnetic field create हुए. Property तो लिखिया पढ़ियो. It is an important property. Another, when charge accelerates or retards, means velocity when varies ना change हुए, it produces electromagnetic radiation. Very good. यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रे, कॉस्मिक रे, ये सब रे गुडाको ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, गोटे चार्ज मूव कला, तो चार्ज मूव कले इलेक्ट्रिक फील्ड तयारी हेबो स्टैटिक जो मूव करछ माने मैग्नेटिक फील्ड सेटर वेरिएशन हेबो, कारण वेलोसिटी बारंबार चेंज होछि, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे क्रिएट हेबो. सो ए तीनटा जिंस तमे मन रखियो, एटा प्रॉपर्टी हमें पांचटा प्रॉपर्टी जानले, गोटे होछि एडिटिव नेचर, आ गोटे हला कंजर्वेशन नेचर, आ गोटे हला क्वांटाइजेशन नेचर, आ गोटे असला that is your invariance nature, and another one is what type of field they are producing in different states. So when it is in rest, electric field only. When it moves uniformly, magnetic field and electric field. When it moves when it accelerates or retards, when velocity changes, then it produces both electric and magnetic field. Next, some concept of force. Force actually charge जदि अच्छी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करियो, आउट चार्ज इन पाखर रखिबा,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे सो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एज ए रिजल्ट ए चार्ज ऊपर गोटे फोर्स डेवलप करियो ए चार्ज ऊपर गोटे फोर्स डेवलप करियो देयर इज ए रूल फॉर इट दैट इज कॉल्ड Coulomb's law so this force is called electric force actually force रे हम जानि छे force यदि कहबा हमर force gravitational force what is force is that agency which changes or tries to change the inertia of body एटा तो तमे जानि छो फर्स्ट 11th क्लास रे जे जो एजेंट चेष्टा करे किबा कर दिए मते इनर्शिया बॉडी रो इनर्शिया जदि रेस्ट अछि रेस्ट को चेंज करे मोशन करे जदि गोटे बॉडी मोशन रे अछि इनर्शिया मोशन करदी सेटा को मते चेंज कर दिए रेस्ट को आनि दे पारे जदि गोटे बॉडी रो डायरेक्शन भी चेंज कर दिए सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एगुडा को चेंज करे जे दैट इज कॉल्ड फोर्स दिस फोर्स मे बी contact force it may be field force जो force contact जो force डेवलप होला that is गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी सहित contact string को हमें टाणी गोटे ब्लॉक अछि सेटे each particles are in contact with each other सेटे जो force डेवलप होला that is contact force and field force केवल गोटे चार्ज रखे ता जो field क्रिएट गोटे चार्ज मूव करिया वेलोसिटी ता जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट दिस इज फील्ड फोर्स सो देयर आर टू टाइप मेनली कांटेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स कांटेक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर जे हमें these are electromagnetic nature and field force may be electric force does not be electric force magnetic force and gravitational force and another is your nuclear force and another is weak force so electric force charge भितर जो डेवलप हो electric force चार्ज मूव करिया द्वारा गोटे भी फोर्स क्रिएट हुए दैट इज मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल मास भितर जो फोर्स डेवलप है ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेमानो जो गोटे फोर्स डेवलप है वेरी स्ट्रांग फोर्स इट इज स्ट्रांग वन दैट इज न्यूक्लियर फोर्स सो अबाउट द फोर्स वीक फोर्स लिप्टॉन्स ग्रेविटॉन से गुडा को फोर्स जोटा कि ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सेमानो भितर जो फोर्स डेवलप है दैट इज very weak force तो एगुडा को हमें डिस्कशन करिया फोर्स चैप्टर रे जेटा कि 11th क्लास रे ऑलरेडी मु ऑफलाइन क्लास रे गुडा डिस्कशन करे सो मेनली हमरो काम होची ए भितरु हमें एक्सट्रैक्ट करिया दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच इज a part of also electromagnetic force so let us come what is electric force electric force the force which is developed due to interaction of two charges this is electric force the force which is developed due to interaction of charged body or charged particles एटा ଗୋଟେ पार्टिकल एटा ଗୋଟେ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल व्हाट इज चार्ज तो भी जଣା अछि सो दीटा पार्टिकल भितर जो फोर्स डेवलप हला फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव अट्रैक्शन करे से फोर्स अट्रैक्टिव हे पारे रिपल्सन भी हे पारे हम जानि छै जदि हमें प्लस नबा तबे अट्रैक्टिव हो ना रिपल्सिव दिस इज रिपल्सिव फोर्स अच्छा -q1 ने भी -q2 ने भी दिस इज आल्सो रिपल्सिव फोर्स the plus q1 ne bhi minus q2 ne bhi this is attractive force so these two are repulsive this is attractive so all like charges attract like charges plus plus minus minus they are repulsive kintu gravitational force namule ame janche kono
always attraction. There is no question of repulsion. Okay, so a force गुड़ा कहते इलेक्ट्रिक फोर्स. Actually इलेक्ट्रिक फोर्स रो गुड़ा प्रॉपर्टी अच्छी. प्रॉपर्टी जानिया पूर्व आम फर्स्ट जानिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तापर आम कंडीशन रे जानिना व्हाट आर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. सो फर्स्ट कम टू Coulomb's law. Then come to Coulomb's law. Coulomb's law. Very important and fundamental law given by Augustine Coulomb, 1785. जेहेतु basic law तो ठीक है मन रखो 1785. And actually he found experimentally by using torsion balance, a balance device. टॉर्सन बैलेंस को यूज करी से दीटा चार्ज भितरे इलेक्ट्रिक फोर्स केते हेबो से बारंबार एक्सपेरिमेंट करले. डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से पाइले जदि q1 बोली गोटे चार्ज पार्टिकल नबा, q2 बोली अनदर चार्ज दीटा पॉइंट पार्टिकल्स वेरी स्मॉल स्फेरिकल पॉइंट बोली हमें मीन करिया. पर हमें देखिबा इलेक्ट्रिक फोर्स रे तळे प्रॉपर्टी आसीबो हम तळे लिमिटेशन करि दवा. दिस law is valid for point charge, not for spheres, not for rods, charged rods. Acha, so for if 2 point particles are there and there is a distance of separation r, q1 q2 are the magnitude of charges, r is distance between them, then there exists a force a q particle को a charge गोटे force exert करिवो. Similarly a point charge को a particle गोटे force exert करिवो. So देखले torsion repulsion हबो किंबा attraction हबो depending on the charges are like charges or unlike charges. Our purpose is if the force is F, Coulomb's law, if force is electric force is F, then F is directly proportional to product of charges, inversely proportional to square of the distance. Product of charges, not only one charge. What is the product? On that product only depends that force. This force is electric force. Because due to charge the force developed, hence electric force. This force. Let us suppose one is plus, another is plus. So there is a force. That force I am giving. Force on 1 due to 2, force on 2 due to 1. These are forces. हमें it mainly जानिबा force रो magnitude as well as direction. So far magnitude is concerned, this force is directly proportional to product charges, inversely proportional to square of the distance. Experimentally found कर. अच्छा, जब I combine कर ले, force will be proportional to q1, q2 divided by r square. देखो अब ठीक simple कर ले, देखा ला experimentally उन्हें constant develop होला. So F is found to be k into q1, q2 divided by r square. K is the electrostatic constant. Electrostatic constant. Okay, this is the fundamental. Actually, it is mathematical. So, हमें लिखला वाला systematically लिखिबा केमती. If when two charges are separated by a distance, by a certain distance, then the electric force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance of separation between them.
separation between them. Simple. That. Okay? When two charges are separated by a certain distance, then the electric force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of the distance. Means, mathematically, let us suppose two charges Q1 and Q2 are separated by a distance R, then force between them, if like charges, then force is repulsion, and the distance is R. Mathematically, force is proportional to charges, inversely proportional to R square. So we can say force is proportional to Q1, Q2 divided by R square. That means force is equal to some constant K into Q1, Q2 divided by R square. K is called electrostatic constant. Means charge magnitude jete adhika habo setiki force adhika habo, distance of separation jete adhika habo force jete kami jibo. Inverse relation, you know what is direct relation, what is inverse relation. Now importance of K, electrostatic constant.